समीर सर, पेटीएम ने अपना फर्स्ट एवर प्रॉफिट पोस्ट लिस्टिंग दिखाया है 122.5 करोड़ फॉर द जून क्वार्टर वर्सेस लॉस ऑफ 540 करोड़ इन द प्रीवियस क्वार्टर। बहुत सारे ब्रोकिंग हाउसेस ने अपने टारगेट्स जो है वो बढ़ा दिए हैं। 1250 1150 के आसपास के टारगेट्स जो है अब पेटीएम के लिए आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वर्स्ट इज ओवर फॉर द न्यू एज टेक कंपनीज? क्योंकि अगर आप जोमैटो इटर्नल के नतीजे भी देखें, उसके बाद एक काफी अच्छा मोमेंटम हमने उस स्टॉक में भी देखा था। इवन नाइका, पॉलिसी बाजार, ऑल दी स्टॉक्स आर डूइंग वेल। सो क्या करना है न्यू एज कंपनीज को? So new age companies we cannot classify with a single brush, right? हम्म। Zomato का business model बहुत अलग है from what a Paytm है. So पहले since करेक्ट। we discussed the Paytm result, Paytm हम्म। G yes first time profitability, but you see bulk of the profits are coming from the lending business, right? जी NBFC kind of a business, जी। not from the payment gateway that initially सब लोग को चाहिए था. Now, if I हम्म। look at the lending business and I value him on a price to book value, and हम्म। what kind of growth is there, I think valuations थोड़े rich है अभी भी. जो ओके। उनकी दूसरी business थी, they sold off to Zomato, of course, हम्म। which is the ticketing and all of that business. So हम्म। you know that kind of वो वो angle of what do you call it, fintech with हम्म। sales kind of क्या बोलते हैं revenues coming from certain fees वो चला हम्म। गया. So I am now, if I have to value purely on the lending business, हम्म। ये minimal profit से doesn't send excitement, but yes, growth ओके। is there. So I think it's still अभी भी long drawn process है. It's not going to हम्म। see any major run up. हाँ, लोगों ने price target बढ़ा दिया, it's all good to say, but where is the profitability to justify? There are many हम्म। NBFCs and banks which are trading at 2 times price to book, जहाँ लोगों को expensive लगता है, which are जी। also growing at a decent pace. So everything needs to be looked at in an independent way. So I'm not a buyer in हम्म। Paytm at this point of time. अभी हम्म। हम Zomato की बात करें तो जी। yes, growth has been fantastic, top line growth. I'm not denying हम्म। that. हम्म। क्योंकि उनका टॉप लाइन ग्रो हो रहा है, उनकी ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट हो रही है, एंड ऑन हम्म। द especially on the delivery of FMCG products, which is quick commerce. So हम्म। वो एक बेनिफिट है, बट हम्म। इट्स स्टिल वेरी, आई मीन अगर आप प्रॉफिट देखें, 25 हम्म। crore profit for the quarter, अगर let us assume they continue to grow and their profits also grow maybe from 25 crores to maybe 50 crores or 80 crores. हम हम्म। 3 लाख करोड़ मार्केट कैप की बात कर रहे हैं. फॉर करेक्ट। जस्टिफिकेशन ऑफ 3 लाख करोड़ मार्केट कैप, the company should at least, I'm saying at least, have minimum 3,000 crore profit, right? जी। अगर राइट। I want to say you should trade at 100 times earnings. To reach हम्म। that 3,000 crores is going to take them a while, because हम्म। जैसा आपका बेस बढ़ता जाएगा, your growth is also going to start tapering down. 100 जी। crores pay to grow 100 is 100%, but 200 to grow 100%, I mean 100, you need to grow 200. So that growth momentum is not going to be easy to sustain. और ऐसी ओके। बात नहीं है कि कंपटीशन उनको सब लेके जाने देंगे कि हम लोग हाथ पे हाथ हम्म। बैठे रहेंगे. सो आई ऑनेस्टली बिलीव वैल्यूएशंस आर absurd. It is an हम्म। index stock, so funds unfortunately have no choice but to buy. But हम्म। again, as good of a company या जितनी भी growth opportunities है, everything comes good at a price, और वो प्राइस नहीं है. अगर एक न्यू एज कंपनी में which I have looked at and I am interested in buying, and हम लोग फिलहाल ले भी रहे हैं, disclaimer, we हम्म। have it, we are हम्म। buying continuously, is a हम्म। company called Firstcry Technologies, ओके। Brainbees Solutions, जो children's product and mother, you know, from 0 to 12 हम्म। plus mothers products, maternity products करती है. We feel हम्म। that is kind of a niche business. यस, वो कंपनी अभी लॉस मेकिंग है, बट जो स्केल अप हो रहा है उनकी बिजनेस का ऑनलाइन रीच एंड जो ग्रोथ होगी, द हम्म। ऑपरेटिंग लेवरेज विल प्ले आउट. वी फील ओवर द नेक्स्ट 3 years ये स्टॉक एक्चुअली एक पॉजिटिव रिटर्न दे सकती है. आईपीओ केम एट 460, स्टॉक मेड अ हाई ऑफ 800, इट्स करंटली ट्रेडिंग एट अराउंड 300 एंड समथिंग, आई कांट रिमेंबर द एग्जैक्ट प्राइस, बट 350 या ऐसा कुछ रफली. 362 या। So we believe कि it's not going to be an immediate run up. हमारे हम्म। हिसाब से next 6 months to 1 year pain will remain in the stock. But if you हम्म। look at it from a 3 to 5 year perspective, मेरे हिसाब से this can be something that can be a multi-bagger. So we've been accumulating that. बाकी हम्म। के नज़ारा टेक which is already run up, या फिर
कार ट्रेड या फिर पीबी फिनटेक, ऑल वैल्यूएशंस आर रिडिकुलसली एक्सपेंसिव. यस, ग्रोथ इज देयर, बट एट सम पॉइंट जब ग्रोथ फेल थोड़ा नीचे आएगा, then people will actually start looking at valuation. So I'd stay away from most of them right at this point of time.